The recording has now started, and you can put your attendance in the chat box. So everybody attended the paper, right? Vinit says it was simple. What about you, Vedant and Kadambari? And Kadambari, you were like asking for permission. Your mail ID is not added to the list, is it so? You have to ask for permission, right? So it is not necessary actually. If your mail ID is not added to the class, please send your mail ID to Vaishali madam, or you can send it to me as well. Okay. So without going or without discussing further about that, so I hope there wasn't any problem in the paper. Was there? पेपर में कोई प्रॉब्लम था? कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया या फिर गलत तरीके से पेपर में मैंने डाल दिया था, ऐसा कुछ? No doubt about paper. Okay, so it was a simple paper. Okay, I'm very happy to hear that. Okay, so I'm presenting my screen now. Tell me whether it is visible or not. Okay, so I think it should be visible now, right? I did not understand how to solve question 2, question 3rd. Oh, which one is it? Just give me a minute so that we can discuss about that question as well. Which question are you talking about? 3rd question. Solve 2 question 3rd. Okay, let me see. Are you talking about add the given polynomials? Is it the question you're talking about? Or simplify? Okay, add the given polynomials. So it was pretty easy, na? So yeah, just let me clarify your doubt. So for that, I will take a blackboard and I will write the question here. Okay, just give me a moment. Okay, so I hope whiteboard is visible to you, and we will discuss that question here. So I hope this was the question. Minus 7 m raised to 4 plus 5 m cube plus under root 2, and the second polynomial was 5 m raised to 4 minus 3 m cube plus 2m square plus 3m plus 6. This is the question you're talking about. We have to add this given polynomial. This is the question, right? Yeah, this is the question. Okay, so it is pretty simple question. You have to add the given polynomial. Okay, so यहाँ पे in the polynomial we have seen standard form, index form, coefficient form. So these forms we have seen, right? So standard form में हम क्या करते हैं? What do we do in the standard form? First of all, we arrange the polynomial in a descending order. So I got stuck due to root 2. No issues, no issues. See, how can you deal with that? So see, minus 7 m raised to 4 minus 7 m raised to 4 plus 5 m cube plus 0 m square plus 0 m plus under root of 2. Then we have 5 m raised to 4 minus 3 m cube plus 2 m square plus 3m plus 6, right? So इसको अगर हमें solve करना है, so how can we do that? Just a moment. Yeah. So minus 7m raised to 4 plus 5m raised to 4, that would be minus 2m raised to 4, 5m cube minus 3m cube, that would be minus, sorry, positive 2m cube. Now
0m square plus 2m square is 2m square. 0m plus 3m is 3m itself. And this should be written as 6 plus under root 2. That's it. We cannot add them. Okay. We cannot add them, so we will write it as 6 plus under root 2. That's it. That is the answer of this question. Okay, now let's come back to our syllabus. I think this was the only question you had a doubt with, and there is no any other, right? Okay, fine. So, in the previous class, we have seen this practice set, and I think we have solved some of the questions from this practice set itself. And I don't think that these questions are hard. One of these questions were in the exam as well. And I hope you students have solved it, right? So now what we will do is we will start the next topic, that is theorem of equal ratios. Okay. So what does this theorem states? If A by B is equals to C by D is given, then A by B is equals to A plus C divided by B plus D is equals to C by D. This property is called as the theorem of equal ratios. तो इसमें कुछ भी मतलब नया logic नहीं है, कुछ नहीं है. So let us suppose we have two ratios. A by B is the first one, C by D is the second one, and these two ratios are equal. So in this case, if we add their numerator and their denominator with each other, so again the ratio does not change. It remains same or it remains equal. So that is called as theorem of equal ratios. Now we will prove this thing. Okay. So in the mathematics, we have to prove everything. So we will see proof of this particular theorem as well. Now let A by B is equals to C by D. ये दो equal ratios है, तो इन दो equal ratios को कुछ तो एक value आएगा जो कि होगा constant K. Okay, so K is given here. Then A is equals to BK. Now how it is? See, A is here, B is in the denominator. So when B goes and multiplies with K, it becomes BK. So A is equals to BK and C is equals to DK. Similarly, C is here, D goes uh, uh, to multiply with K here. So C is equals to DK. So we have these two values. Now what we will do is we will try to prove a plus c divided by b plus d. What is value of this? Now अभी हमने ये ये proof नहीं किया, actually हमें दिया है कि a by b is equals to c by d है. This is given, and we know that the value of these two ratios is equal, and that's why we have kept it as a k. Now अभी हमें right hand side prove करनी है, that is a plus c divided by b plus d. So a plus c divided by b plus d. अभी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है b के एंड c की वैल्यू है d के. सो मैं यहाँ पे a और c की वैल्यू न्यूमरेटर में चेंज कर देता हूँ. सो व्हाट रिमेन्स c? k can be taken as common, so k is here. Then we have b plus d divided by b plus d. So ये b plus d cancel out हो जाएगा, and again its value is k. That means a plus c divided by b plus d is again equal to k, and a by b is equals to c by d is equals to k तो ऑलरेडी था ही. मतलब ये तीनों चारों रेशो जो है वो इक्वल है. So this is how we can prove it. Okay, so I hope this proof was pretty simple and you don't have any problem with this. Is it? Okay, now let's go further. Just give me a minute. So what is next thing? Uh, we know that A by B is equals to AL by BL. Now let us suppose we have one ratio and उस ratio के साथ में numerator में भी अगर हम कोई value change करें and not change actually, कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में भी हम एक एल वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन द डिनोमिनेटर आल्सो वी आर मल्टीप्लाइंग वन एल वैल्यू. सो दैट डज नॉट चेंज मीनिंग ऑफ दिस रेशियो, राइट? सो a by b is equals to al by bl. This is true. If a by b is equals to c by d is equals to k, then al by bl is equals to cm by dm. Now see,
यहाँ पे c by d के साथ में हमने l को ही मल्टीप्लाई नहीं किया है, वी कैन मल्टीप्लाई एनी अदर वेरिएबल, सो यहाँ पे cm by dm है. So in this case also al plus cm डिवाइड बाय bl plus dm इज इक्वल्स टू k. मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मल्टीप्लायर है, दोनों रेशो का जो मल्टीप्लायर है, it is not mandatory that it should be same, it may be different. Okay, so this is what we get to know from this particular statement. Similarly, if a by b is equals to c by d is equals to e by f is equals to g by h in finite terms, and l m n are non-zero numbers, so कितने भी मतलब अगर ये रेशियो रिपीट हो जाते हैं, then also their summation will have this the ratio of their summation will be equal to the individual ratio. ओके मतलब यहाँ पे तीन रेशो है, ए बाई बी एक है, सी बाई डी एक है, और ई बाई एफ एक है. तो ये तीन रेशो अगर इक्वल है तो इनकी अगर हम सम करेंगे, सो ए एल प्लस सी एम प्लस ई एन एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई बी एल प्लस डी एम प्लस एफ एन, सो ये जो सम है, इस सम का रेशो भी इक्वल टू इंडिविजुअल रेशो रहेगा या फिर ऑल ऑफ दिस रेशो रहेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज. नाउ इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. सो सी, यूज योर ब्रेन पावर. इन अ सर्टेन जिम्नेजियम देयर आर 35 गर्ल्स, 42 boys in the kids section, and 30 girls and 36 boys in the children section, and 20 girls and 24 boys in the teens section. What is the ratio of the number of boys to the number of girls in every section? For physical exercises, all three groups gathered on the ground. Now, what is the ratio of number of boys to the number of girls? From the above answers of above questions, did you verify the theorem of equal ratio? तो हमें ये verify करना है. Now, we will verify for this particular statement. Okay, so 35 girls and 42 boys in the kids section. So kids section में 35 girls है, 42 boys है. So boys to girls ratio कितना हुआ? Who can tell? What is the ratio? Anyone? Anyone with any idea how we calculate ratio? बॉयज टू गर्ल्स का रेशो हमें निकालना है फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. जिस स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन किया है ना, वही वही का. सो सी, मैं बॉयज के लिए लिखूंगा बी और गर्ल्स के लिए लिखूंगा जी. सो बी टू जी अगर मुझे रेशियो निकालना है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? बी इज 42 and G is 35. So 7 5s are 35 and 7 6 are 42. So it is 6 by 5. Boys to girls, it is 6 is to 5. Now for next section, see 30 girls and 36 boys in the children section. अभी children section के लिए हमें ये रेशो निकालना है. So what it is? Can you find out? What is the ratio of boys to girls? 36 boys and 30 girls. That means again we can divide by 6. So again it would be 6 is to 5. It would be 6 is to 5. Now for the third section, for the teens section, we have 24 boys and 20 girls. So again, what would be the ratio? समझ रहे हो ना? बाकी लोग भी समझ रहे हो ना? वेदांत and विनीत. बॉयज टू गर्ल्स इट इज 6:5. मतलब ये तीनों सेक्शन के लिए, किड्स सेक्शन के लिए, चिल्ड्रन सेक्शन के लिए और टीन्स सेक्शन के लिए, ये तीनों रेशियोज कैसे हैं? तीनों रेशियोज इक्वल है. ओके, 6:5, 6:5, 6:5. Now what we will do is, now for this statement, now consider this statement. Okay, for physical exercises, all three groups gathered on the ground. तो अभी ये जो तीनों ग्रुप है, किड्स वाला, चिल्ड्रंस वाला और टीन्स वाला, ये ग्राउंड पे गैदर हो गए. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन टोटल? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन टोटल?
So 42 in the kids section, 36 in the children section, and 24 in the teen section, right? So teens plus children, it would be, no, it's not 5 and 6, Vinith. It is 102, 102. Okay, it is 102, 102. Then next, just a moment. Okay, now what is total number of girls? 35 girls plus 30 girls, and then lastly we have 20 girls. 20 plus 30 is 50, 50 plus 35 is 85. So total number of boys are 102 or 102, and total number of girls are 85. Now find out the ratio of this boys to girls. 102 divided by 85. It is again 6 to 5. Is it so? It should not be the same, or it should be same. What do you think, Vinit and Vedant? It should be same or different? It should be same. That is what our, yeah, that is what our theorem of equal ratios says. Now from the above answers, or answers of the above questions, did you verify the theorem of equal ratios? Did you verify? Yes, we did verify it, right? Yeah, good. So now let's go to the next question. Fill in the blanks in the following statements. So first uh, question is a by 3 is equals to b by 7 is equals to 4a plus 9b divided by dash dash. Now don't get confused between these things, like sir यहाँ पे a by b होना चाहिए था, तो यहाँ पे a by 3 है, और राइट साइड में b by 7 है, तो वहां पे तो c by d होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. मतलब ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना. इट कैन बी एनीथिंग. वी हैव टू टेक व्हाट इट इज गिवन. तो यहाँ पे अगर हमें a by 3 दिया है, तो a by 3 ही कंसिडर करना है, इज इक्वल्स टू b by 7. नाउ 4a plus 9b, a को किससे मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स? a is multiplied with what? a is multiplied with 4, right? So अगर a को 4 से मल्टीप्लाई किया है, so again 3 should be multiplied with 4. Did you get this point? हमें न्यूमरेटर, हमें हमने न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, सो डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इन नेक्स्ट केस b को किससे मल्टीप्लाई किया है? b को मल्टीप्लाई किया है 9 से, राइट? सो 7 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 4a प्लस 9b, ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, मतलब हमने 4a ऐड कर दिया 9b के साथ में. तो अभी हमें 4 इंटू 3 ऐड करना पड़ेगा 9 इंटू 7 के साथ में. ओके, सो या, सो डिनोमिनेटर वुड बी 12 plus 63. 4 3s are 12 and 9 7s are 63. So this is our denominator. So if we add this, it would be 75. So what should be the value in blank? 75 it should be, right? So this is how we solve it. Now let's take another example. तो यहाँ पे हमें 3 ratios दिए हैं, right? x by 3 is equals to y by 5 is equals to z by 4. So ये 3 ratios equal हैं. Now in the numerator we have 5x minus 3y plus 4z. So denominator में क्या आएगा? So x को मल्टीप्लाई किया है 5 से, so 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, that is one thing. y को मल्टीप्लाई किससे किया है स्टूडेंट्स? y is multiplied with what? Not 3. It is negative 3. Correct. Exactly. -3 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? सो 5 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर? y by 5 है ना, y को -3 से किया है तो 5 को भी -3 से ही करना पड़ेगा. z को 4 से किया है तो 4 को भी 4 से ही करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज. सो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हमें
x को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. So these are the ratios. This is the answer. So we add numerator, that is 5x minus 3y plus 4z. So we have to add denominator as well, that is 15 minus 15 plus 16, 15 15 कट जाएगा and it would be 16 only. So in the blank space we have to write 16. Okay, so this is the ratio of, this is the theorem of equal ratios. Now we have a next example, which is very interesting example. So see, if a is equals to x minus 2y plus 3z is equals to b divided by y minus 2z plus 3x is equals to c divided by z minus 2x plus 3y, and x plus y plus z is not equals to 0, which is given, then prove that each ratio is equals to a plus b plus c divided by 2 into x plus y plus z. Okay, so see how we proceed with such kind of examples. अभी you don't know how to proceed, right? तो आंसर क्या हमें, what we expect, what we have to prove, we have to prove that a plus b plus c divided by 2 into x plus y plus z. So this is the thing that we have to prove, right? So न्यूमरेटर में क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी लिखा है, और हमारे पास जो इंडिविजुअल रेशियोज है तो इनके भी न्यूमरेटर में क्या है, ए बी एंड सी है. तो मतलब एक हिंट हमें यहाँ पे ये मिलता है कि वी हैव टू ऐड दिस रेशियोज. डिड यू गेट दिस पॉइंट? वी हैव टू ऐड दिस रेशियोज. सो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा जो दिया हुआ है इसे हमने के बराबर मतलब इक्वेट कर लिया है. वी राइट इट एज इक्वल टू के बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज. मतलब इक्वल रेशियोज के थ्योरम से हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू जो है इनके समेशन के भी बराबर ही रहेगी. So this is again equal to k is equals to a plus b plus c divided by this plus this plus this. Okay, so so see what remains. Now we will try to solve it. See how how can we do this? Yeah. So the see, this is x plus 3x is 4x, and 4x minus 2x is 2x. So it is written here. Now minus 2y plus y, so that is y only, negative y, and negative y plus 3y is positive 2y, so we have written here. Then lastly we have 3z minus 2z, so 3z minus 2z is z only, and z plus this z is 2z, so we can take common as 2, and a plus b plus c is in the numerator, and in the denominator we have x plus y plus z and into 2. Okay, so k की वैल्यू जो है वो ये आई, right? This is equals to k, so we can write it like k is equals to a plus b plus c divided by 2 into x plus y plus z. So k की वैल्यू अगर ये है, and again k is equals to all of these ratios, मतलब this equals to k, this equals to k, this equals to k, and k is equals to this, that means we have proved whatever we have been asked in the question. Okay, so students, just give me a second. I'll be right back. Okay. I have to record one different class. So just a moment. I'll be back. Law Prakash ji, actually I'm in a class. So अगर कोई join होता है ना, so you can unmute and speak. Okay. Okay. Yeah. Hello. Am I audible, students? Okay. Fine. Sorry for the interruption. The next example. So if y by
b plus c minus a is equals to z by c plus a minus b is equals to, okay, x by a plus b minus c. Then prove that a by z plus x is equals to b plus, sorry, b by x plus y is equals to c plus y plus z. C divided by y plus z. Okay, sorry if I read it in a wrong way, but I hope you understand the question कि हमें दिया क्या है और पूछा क्या है. Okay, so first thing is, see, यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर में एक्स वाई जेड है दिया हुआ और डिनोमिनेटर में ए बी सी है जो दिया हुआ क्वेश्चन है, और जो प्रूफ करना है उसमें हमें न्यूमिनेटर में ए बी सी है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई जी है, एक्स वाई जेड है. ओके, सो सबसे पहला ऑपरेशन दैट वी हैव टू परफॉर्म इज इन्वर्टेंडो. व्हाई इन्वर्टेंडो? बिकॉज जो चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं उसमें ए बी सी ऊपर आता है, लेकिन जो चीज हमें दी है उसमें ए बी सी जो है वो नीचे है. Okay, so that's why we will first of all perform invertendo. So invertendo perform करने के बाद में what do we get? We get equation in such form कि ABC जो है वो ऊपर टर्म्स है और XYZ या फिर XYZ जो टर्म्स है वो नीचे है. Now let these all terms equals to K. अभी ये जो सारे टर्म्स है इसको हम equals to K रख देते हैं. Now then what is next? So see, by theorem of equal ratios, अभी देखो, by theorem of equal ratios, so यहाँ पे हमें क्या करना है, just a minute. Okay, so see, now how do we proceed? See, we don't have, मैंने जैसे कहा था कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था ना कि you don't have to follow a fixed pattern. मतलब इसके पहले वाला जो एग्जांपल था तो इसमें हमने क्या किया था, we added all of them, like तीनों को हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. सो जो पहला टर्म है, पहला टर्म कौन सा है, a डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स, दिस वन. तो ये टर्म हमें अगर चाहिए तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड दीज टू ओनली. मतलब ये दो ही अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमें न्यूमरेटर में z प्लस एक्स मिल जाएगा. वी डोंट नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज आवर प्रोसीजर. सो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, c प्लस a माइनस b plus a plus b minus c divided by z plus x, and which is equals to k because of theorem of equal ratios. Okay, so सिर्फ इन दोनों को ही मैं ऐड करता हूँ. So it is what it is 2a by z plus x. Now 2a by z plus x यानी कि ये जो c है c से कट जाएगा, b है b से कट जाएगा, और a plus a 2a हो जाएगा. So this is first one. This is first one. This is still not proven. अभी तक इसे प्रूफ नहीं किया है. Okay, just a moment. Sorry for the interruption. Okay, so I hope we will not have any disturbance hereafter. Okay, so that was the last one. Sorry for it. So देखो, पहला हमने कैसे अचीव किया? We added these two. Now in the second, we have to add the terms which have numerator as x and y. So इन दोनों को ऐड करेंगे. This is y, this is x. इन दोनों को ऐड किया. So again we get 2b divided by x plus y. Now last one, we need y plus z in the numerator, sorry, denominator. So we will add these two terms, the first one and the second one. So we get this 2c divided by y plus z. So how 2c? B gets cancelled with minus b, a minus a gets cancelled with a, and c plus c is 2c. Now this is equals to 2a by z plus x is equals to 2b by z x plus y is equals to 2c by y plus z. So we can take 2 out from everyone. Like
तीनों डिनोमिनेटर में से अगर हम 2 को निकाल देते हैं, so it does not change the meaning of this equation. Okay, so that's why a by z plus x is equals to b by x plus y is equals to c by y plus z. Now just tell me, did you understand the last step जो हमने 2 निकाल दिया? Did you understand that or not? Yes or no? Any confusion in this step? Okay, you understood this. Great. Okay, so now next example is solve 14x square minus 6x plus 8 divided by 10x square plus 4x plus 7 equals to 7x minus 3 divided by 5x plus 2. Now by observation we see that multiplying by 2x the predecessor and successor of right hand side, we get two terms of predecessor and successor of the left hand side. But before multiplying, we must ensure that x is not equals to 0. So यहाँ पे अभी हमें observation करना है and we have to find that what is that number which with which we can multiply to this particular राइट हैंड साइड इक्वेशन. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे सो इट इज 14x स्क्वायर माइनस 6x एंड राइट साइड में अगर आप देखोगे तो इट इज 7x माइनस 3. सो अगर इसे हम 2x से मल्टीप्लाई करें राइट साइड को तो ये क्या बन जाएगा? 14x स्क्वायर माइनस 6x बन जाएगा. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर वी हैव 10x स्क्वायर प्लस 4x. राइट हैंड साइड में हमें है हमारे पास है 5x प्लस 2. अगर 5x प्लस 2 को हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जार 10, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इज 4x. मतलब ये जो टर्म्स है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी और ये जो टर्म्स है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, but before that we must ensure that x is not equals to 0. अगर x is equals to 0 है so this will change the meaning of this particular equation. Okay, now how do we check that? See, if x is equals to 0, then this complete part will be 0. This complete part will be 0. Right? And this part will be 0 and this part will be 0. So what we have? We have 8 by 7 in the left hand and minus 3 by 2 in the right hand side, which is not equal. Is it? It is not equal. Right? So we can simply say x is equals to 0 is not the correct answer. राइट, ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना. मतलब 8 बाय 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2 हम लिख ही नहीं सकते ऐसा. सो x की वैल्यू 0 नहीं है. हमने क्या माना था कि x की वैल्यू 0 है. इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन सो देन ऐसी टर्म हमें मिल रही है जो कि कंप्लीटली इनवैलिड है. इसका मतलब जो हमारा पहला अजम्पशन था कि x इज इक्वल्स टू 0 है वो गलत था. सो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज प्रूवन. राइट, नाउ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर प्रूव हो गया तो मल्टीप्लाई प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ RHS बाय 2x. सो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इक्वल टू k. ये हमें ऑलरेडी दिया है, ये दो तो इक्वल है ही. सो दैट इज इक्वल्स टू k. सो अगेन व्हाट डू वी हैव? 14x square minus 6x plus 8 divided by 10x square plus 4x plus 7 is equals to 14x square minus 6x divided by 10x square plus 4x is equals to k. Now we can apply here theorem of equal ratios. So theorem of equal ratios जब हम apply करेंगे, so what will happen is see, we will add these two. Basically what we are doing is, no, we are not adding it, we are actually subtracting it. We are actually subtracting it. Okay, so जब हम पहले इसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये 14x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. ये माइनस 6x इस ये माइनस माइनस पॉजिटिव 6x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 10x square will be cancelled with this minus 10x square. 4x will be cancelled with this minus 4x. So what is remaining? 8 by 7. So value of k is 8 by 7. K is equals to 8 by 7.
सो ये हमारे रेशियो की वैल्यू आई. नाउ is that our what we say, is that our motto? Do we want to find out the value of ratio, or do we want to solve this equation and find the value of x? We want to find out the value of x, right? So for that what we have to do, yeah, we have to solve further. मतलब k की वैल्यू आ गई तो हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है. सो k की वैल्यू 8/7 है, ये हमें पता है. 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8/7, क्योंकि इसकी वैल्यू k थी तो मैंने इसको इक्वल रख दिया. नाउ 7 into 7 is 49x, minus 3 into 7 is 21, 5x into 8 is 40x, and 2 into 8 is 16. So this has become now linear equation, right? So take this 40x to left side, 21x to right side. So we have 49x minus 40x is equals to 16 plus 21, which is 9x is equals to 37, and x is equals to 37/9. So this is our final value. This is what we were trying to find out. Okay, so x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, that is x is equals to 37/9. इस एग्जाम्पल में किसी को भी कोई डाउट कि सर ये हाउ डिड वी सॉल्व दिस स्टेप, और व्हाट डिड वी डू इन दिस, ऐसा कुछ कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए. इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, so now fill in the blanks quickly. Fill in the blanks of the following. X by 7 is equals to y by 3 is equals to 5x plus 3y divided by what should be in the denominator. Quick answers, all of you. 36. Vedant, Vinit, did you solve it, or you're just copying Kadambari and putting the answers? Okay, so we'll see. देखो यहाँ पे 3x plus 5y है न्यूमिनेटर में, मतलब x को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, सो 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सो 7 3 जार 21. ओके, नाउ y को मल्टीप्लाई किया है 5 से, सो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, राइट? सो 21 plus 5 3s are 15. 15 plus 21 is 36. Now, Kadambari, wait for a minute and tell me the ratio. Fill the second blank. जो second वाला blank space है ना, तो वहां पे क्या आंसर आएगा बताओ, विनीत, वेदांत? Solve it. Solve it. चलो, I will give you a hint. हमने x को 7 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? सो डिनोमिनेटर में क्या है x के? 7 है. तो x को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 7 multiplied by 7, how much it is? You both, Vedant and Vinit. 7 multiplied by 7? 49. Okay. Now take this aside. Now अभी हमने y को -9 से मल्टीप्लाई किया है. y को -9 से मल्टीप्लाई किया है. So 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 9 1s are 9, 9 2s are 18, and 9 3s are 27. But 27 is what? Positive or negative? Is it positive or negative? It is negative. It is negative ना. हमने y को -9 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 को भी हम -9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो -9, सॉरी, या -9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -27. सो 49 -27 कितना हुआ? हाउ मच इट इज? 49 -27 कितना हुआ? 22. So that should be the second blank space. Okay, so 22 is the answer. Now for second one, a by 3 is equals to b by 4 is equals to c by 7 is equals to a minus 2b plus 3c, all of them you can solve it at home. Okay, so
try to solve it at home. This is your homework, okay? And if you feel any difficulty while solving, we can discuss that in the next class. Okay, so that's it for today students. I hope uh, you were able to understand whatever I have taught you. Okay, so I'll see you in the next class then. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Leave the class, Vineet.